Hi everyone, I'm so sorry. I think I was speaking on mute. I hope I'm audible now. Hey, yes, I hope I'm audible now. Great. So sorry for the inconvenience. I hope you're having an amazing day. So, in this stream, we're going to talk about how much coding you need as an individual to sit for your placements. चाहे वो off campus हो या on campus, that does not matter. We'll cover every path. And guys, we at Coding Ninjas are working very hard to bring the best content for you on the YouTube for free. So do support us by liking the streams, by engaging in the chat section, and do comment out if you have any views. And if you want something new from the channel, do suggest some videos in the chat section. And yeah, do subscribe to the channel, guys. I'll come to the chat section, your doubts after I've covered, or I'll take a 5 or 10 minutes break from the session, and then we can chat and we can cover your doubts. I hope that works. So let's start. Now, before moving to the content, I'll just give a brief introduction about myself. So I am Rubin Kaur. I am working as a intern at Amazon, support engineer intern, and apart from that, I'm a full-time content creator here uh, at Coding Ninjas. And yeah, that's it about me. So let's start. Okay, so coding for placement prep. Now, coding for placement prep, before starting placement prep, I am hoping you know the basics. Like, you should know the basics, first of all, of any programming language. First step as an individual, if you're starting programming, the first thing you should consider is कि just pick a language, any language, it does not matter कि आप जावा ले रहे हो सी प्लस प्लस ले रहे हो या पाइथन ले रहे हो पाइथन भी इज इन ट्रेंड अगर फैंग कंपनीज का एम कर रहे हो तो देर इज नो there is no one stopping you कि don't do python fang में it's completely normal if you have python experience it's better because they do have scripts they work on automation so they do consider python programmers. Yeah, I can't say about the other companies. Yeah, they do have some kind of range कि वो सिर्फ Java या C++ programmers लेते हैं. There is one of the company I sat in, I think Josh. Josh का test नहीं होता है Python में. So they just have two options, either Java or C++. And yeah, that's it. मतलब कोई भी एक language choose करो. First thing is that. Uh, let's start from here. तो किसी भी एक लैंग्वेज में आपको बेसिक्स अच्छे से आना चाहिए बेसिक्स में क्या क्या आता है बेसिक सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज लैंग्वेज वर्क कैसे कर रही है उसमें क्या क्या फंक्शंस यूज कर रहे हैं इनबिल्ट फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए कि कई बार आपको प्रोसेस जल्दी करना है या आपको शॉर्टकट चाहिए किसी चीज का तो आपको इनबिल्ट फंक्शंस पता होने चाहिए अपनी लैंग्वेज के यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट ऑल डेटा टाइप्स आर देयर इन दी लैंग्वेज वेरिएबल्स कैसे यूज करते हैं हम लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट्स आइटरेटिव एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज ऊप्स कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए लाइक अगर आप जावा या एसटीएल दैट इज the standard template library in C++. So you should know about these things in either of the language you have taken as your personal, the first programming language. So जब आपको इन चीज की नॉलेज है जब आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो अगर आपने जावा में स्टार्ट किया है तो यू वुड बी फेमिलियर विद कि हम जावा में जावा पॉइंटर सपोर्ट क्यों नहीं करता है जावा में कौन कौन सी टाइप की इनहेरिटेंस है जावा में जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं सो
जावा इंटरप्रेटर है, कंपाइल टाइम लैंग्वेजेस, तो ये सब चीजें आपको पता होंगी। एंड जब ये चीजें क्वेश्चन होंगी आपसे इंटरव्यूज में, मोस्टली इन चीजों पे इतना इंटरव्यूज में ध्यान नहीं दिया जाता, बट ये चीजें आपके डेली वर्क में काम आती हैं। सो आई होप दैट मेक्स सेंस। एंड बेसिक्स के बाद द फर्स्ट स्टेप शुड बी आपको डीएसए शुरू करना है। तो डीएसए होता क्या है, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, व्हाई इज एवरीवन सो कंसर्न्ड अबाउट इट। तो जब हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात करते हैं या हम किसी भी टेक की कंपनी की बात करते हैं, तो फर्स्ट थिंग दे ग्रेड यू ऑन इज व्हाट इज और हाउ स्किल्ड यू आर इन द यूसेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। तो mastering of DSA is something you need to do eventually if you are planning to sit into placements, and they need to measure ki how good programming skills and problem solving skills of the programmer are, because they're hiring a programmer, right? तो वो expect करते हैं कि candidate के पास अच्छी problem solving skills हो, programming skills हो, उनको पता हो कि वो कौन सा stack use कर रहे हैं, एफिशिएंट स्टैक यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो ऑल दिस कि हम कौन सा स्टैक यूज कर रहे हैं, इट इज वेरी important when you're sitting in your placements, because that is what interviewers judge you on। ठीक है? तो काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं बडिंग प्रोग्रामर, किसी भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट के माइंड में, कि मेरे को कंपनी लेवल की कोडिंग कैसे आएगी, या हाउ कैन आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर डीएसए। एंड सबने ही अपने अलग अलग पाथ्स निकाल रखे हैं। सो फॉलो एनी पाथ यू वांट, किसी भी के अगर इफ यू आर फॉलोइंग अ पाथ, जस्ट मेक श्योर यू आर कवरिंग मेजर सब्जेक्ट्स की आपको एटलीस्ट जो मेन टॉपिक्स हैं वो पता हो। तो व्हाट आई यूज टू डू कि मैं ना हर टॉपिक को लिख लेती थी, लाइक जैसे मैंने डेटा स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पे, तो डेटा स्ट्रक्चर्स किसी भी लैंग्वेज में, these are all the data structures। इसके अलावा भी there are advanced data structures like tries and sorry, I was just reading a chat, I'll just come to your chat questions later। uh, तो as I was telling कि advanced data structures भी होते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उन पे जाओ। देर इज ट्राइज, देर इज सेगमेंट ट्रीज, देर इज एडवांस्ड ग्राफ थ्योरी। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ स्किल्ड यू आर। बट हाँ, अगर आप बेसिक से शुरू कर रहे हो तो दिस इज समथिंग, दीज टॉपिक्स आर समथिंग यू शुड फोकस अपॉन। Guys, the link of this chat or link of this roadmap is given in the chat description, so you can just select that. It is the one that is pinned by Coding Ninjas. So you can open and you can see to this mind map anytime you want. You can start it. And yeah, as I was saying, ki arrays, strings, linked lists, stacks and queues, trees, binary trees, priority queue and heaps, graphs. Again, इन सब का बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है, मतलब बिफोर डाइविंग इनटू द एल्गोरिदमिक पार्ट। ठीक है? नाउ कमिंग बैक, मैंने ये सब बहुत बहुत सारे वास्ट नाम लिए हैं अभी इन अमेजिंग डेटा स्ट्रक्चर्स के, बट इस डेटा स्ट्रक्चर का यूज क्या होता है? तो लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल। लेट्स से आप किसी भी साइट पे ब्रोज कर रहे हो, लेट्स से आप अमेजोन की साइट पे ब्रोज कर रहे हो। जब आप अमेजोन की साइट पे ब्रोज करते हो, उनके डिफरेंट कैटलॉग्स अवेलेबल हैं, राइट? आप किसी भी चीज को सिलेक्ट करके उन पर्टिकुलर चीजों का रेट देख सकते हो, उन पर्टिकुलर चीजों की डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। लेट्स से आप एक फोन बाय कर रहे हो, ठीक है? आप amazon पे जाओगे, आप सर्च करोगे कि यू वांट अ मोबाइल फोन, लेट्स से आप एप्पल का आईफोन बाय कर रहे हो। आप एप्पल डालोगे वहां पे एंड यू विल बी displayed a number of things of which are designed by Apple, and उनमें से सिलेक्टिव आईफोन्स भी आ जाएंगे, एंड उनका
रेट आ जाएगा, एवरीथिंग वुड बी शोन टू यू इन जस्ट वन पेज विद जस्ट वन क्लिक। तो amazon के पास बहुत सारा डेटा है, नॉट जस्ट अलग कैटेगरीज का बट फोन्स का ही। ठीक है, फोन्स में कितने सारे ब्रांड्स हैं, सब कुछ है, बट आपने जैसे एक सिलेक्टिव कीवर्ड डाला एप्पल मोबाइल फोन्स और समथिंग, इंस्टेंटली इट पॉप्ड अप एंड आपको सारे आईफोन्स दिखने लग गए, राइट? आपको एप्पल के आईफोन्स और उनके रेट दिखने लग गए। सो दैट इज हाउ कि हम वहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, एंड उस डेटा स्ट्रक्चर ने पूरे जितना भी हीप ऑफ डेटा है उनके पास उसमें सॉर्ट किया द पर्टिकुलर गिवन कीवर्ड, उसमें से सर्च किया एंड हमें दिखाया, राइट? इससे अच्छा एक यूजफुल सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से आप डिक्शनरी में एक वर्ड सर्च कर रहे हो, राइट? मैनुअल डिक्शनरीज होती हैं सबके घर पे। तो आप एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में वर्ड सर्च कर रहे हो, तो आपको पता है कि लेट्स से अगर मेरा वर्ड एम से शुरू हो रहा है तो इट वुड बी समवेयर नियर दैट मार्क ऑफ एम और समथिंग, तो आप सीधा एम पे जाओगे। यू वोंट ब्रोज थ्रू ए बी सीज एंड डीज, राइट? तो दिस इज वेयर वी यूजिंग बाइनरी सर्च। आप सीधा मिडिल में जा रहे हो एन और एम के आसपास एंड देयर यू आर सर्चिंग फॉर द वर्ड। So that is where ki that is how we actually use these data structures in our daily life too. ठीक है? जहाँ हम बात कर रहे हैं कि ऑर्डर में चीजें आती हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लीफो, एंड इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक। जो आप अगर आप बिगिनर हो तो आप ये डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ोगे आगे जाके। एंड या अगेन अगर आप मैप्स यूज करते हो तो मैप्स में गूगल मैप्स और जेनेरिक मैप्स साइट ऑन एप्पल, तो उसमें भी हम इजीली किसी भी जगह का नेविगेशन पाथ देख लेते हैं, राइट? सो इट इज वेरी इजी कि हम अपनी स्पेसिफाइड लोकेशन इजीली सर्च कर पा रहे हैं पूरे वर्ल्ड के मैप में। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ algorithms and data structures eventually, and this is how important data structures is. And yeah, तो basics data structures आपको आना चाहिए। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में ये सब आते हैं कि जो कि मेंशन्ड है स्टैक्स में, दैट इज इस माइंड मैप में एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज, ये सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। एंड हैश टेबल्स इन फैक्ट। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास ट्रीज, ग्राफ्स, हीप्स, ये सब आते हैं। ठीक है, ट्रीज अगेन न्यूमरल टाइप्स के होते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे इनको समझ रहे हो। बेसिक्स पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट नोइंग बेसिक्स, विदाउट नोइंग कि हम इनको यूज कैसे करते हैं, इनका सिंटैक्स क्या है, आप एल्गोरिथम्स में डाइव इन नहीं कर सकते। ठीक है, द फर्स्ट टॉपिक everyone should start with is the data in data structures is arrays, and array होता क्या है? It is just a collection of homogeneous elements जो कि एक तरीके के elements हैं in a continuous memory block। ठीक है, the size of this array is predefined, and हर एलिमेंट के पास एक अपना इंडेक्स नंबर होता है जिससे हम उसको सर्च कर सकते हैं पर्टिकुलर एरे पे। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर यूजुअली एरेज में 0 से शुरू करते हैं टिल n-1, राइट? एंड गाइज, हर एसेंशियल टॉपिक के आपको न्यूमरस अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे कोड स्टूडियो पे। जैसे ही आप कोड स्टूडियो पे जाओगे, अगेन वहाँ पे डिफरेंट टैब्स होंगे एंड आप इजीली क्वेश्चंस ब्रोज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपका क्या लेवल है, कौन सा क्वेश्चन आपने करना है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर देयर फॉर फ्री। तो बिफोर गाइस मूविंग ऑन टू एल्गोरिदम्स, आई वुड रियली रेकमेंड कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स का बेसिक पता हो। दैट इज व्हाई आई क्रिएटेड टू सेपरेट ब्लॉक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। तो जब हम एल्गोरिदम्स की बात करते हैं, व्हाई एम आई सेइंग कि एल्गोरिदम्स अलग से करना है? बिकॉज
हम जब भी एल्गोरिदम की बात करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमने सीखा अभी, कि हमने बेसिक सीखा डेटा स्ट्रक्चर्स का, उसके बाद जब हम उसको रियल टाइम में अप्लाई कर रहे हैं, राइट? जब हम अमेज़न यूज़ करते हैं, अगर वो रिजल्ट्स मेरे को 5 मिनट बाद देगा, दैट वुड रियली अ, डिक्रीज़ इट्स यूज़र इंटरफेस, राइट? मतलब वो यूज़र लूज़ करता रहेगा अमेज़न अगर लेट रिजल्ट्स आए फॉर सम रीज़न। तो दैट इज़ व्हाई उन्होंने अपना एल्गोरिथम इस तरीके से मोल्ड कर रखा है कि इट गिव्स द रिजल्ट्स इन द फास्टेस्ट पॉसिबल वे दैट देयर इज़ प्रेजेंट। तो हमें रिजल्ट्स इंस्टेंटली मिलते हैं एंड अगेन हमें रिजल्ट से एंड अगेन बहुत सारा डेटा है, इसको मैनेज करना इज ऑब्वियसली, एंड हम हमारा एल्गोरिथम अगर और स्पेस ऐड कर रहा है इस डेटा में, तो वो बहुत ज्यादा स्पेस लेगा, दैट इज ऑल्सो नॉट efficient as a program. तो हमारे पास दो complexities होती हैं, that is time and space, and we have to make sure कि हमारा program इनमें best है, ताकि it's giving the fastest possible results without using any extra space in the memory. I hope it's clear till now. And guys, if you have any doubts, please ask in the chat. Uh, yeah. Okay, so let's move on. Now, as I was talking about algorithms may we have recursion and backtracking. Now, what is recursion and why is this important? Now, recursion is a technique in programming जहाँ पे function calls itself डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में अगर आप डीपी की साइड जा रहे हो, तो बिफोर नोइंग द ग्रास्प अबाउट बिफोर गेटिंग अ ग्रास्प अबाउट रिकर्शन, रिकर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज डोंट मिस आउट, डू प्रैक्टिस enough amount of questions on recursion because guys it's the most important topic। ठीक है, आप इसके विदाउट रिकर्शन आप डीपी में नहीं घुस सकते हो, एंड डीपी में मेजरली जितने भी हाई और जितने भी हार्ड या मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं वो डीपी बेस्ड होते हैं। तो इट इज एज आई सेड कि ये मेजरली हमारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में यूज होता है, जहाँ पे हम एक वास्ट सिनेरियो को, एक वास्ट प्रॉब्लम को छोटे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम रिकर्शन का मेन काम क्या होता है कि अगर हमारे पास एक मेजर बड़ी सी प्रॉब्लम दे रखी है, उसको बिट्स एंड ब्लॉक्स में तोड़ना एंड देन उसको सॉल्व करना। नाउ बैक ट्रैकिंग क्या होता है? एनीवन इन द चैट हु नोस कि बैक ट्रैकिंग क्या होता है? And guys, it would be really helpful if you can pin up in the chat in which year you are from, so that when I'm reading the chat, I can relate and I can answer key what is the path you can follow, so that we can have a nice conversation here. Uh, so coming to backtracking, क्या होता है? Backtracking is again a programming technique जो recursion पे based है, and इसमें क्या होता है? It uses recursion to build an overall solution by incrementally going through smaller levels of the problem until the solution is reached। ठीक है, वहां पे हमने प्रॉब्लम को छोटे पीसेस में तोड़ दिया था एंड फिर हम सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे हम प्रॉब्लम को धीरे धीरे रेस कर रहे हैं, एंड तब तक रेस कर रहे हैं जब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। इसमें काफी सारे एल्गोरिदम्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवाइड एंड कॉन्कर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आर अ पार्ट ऑफ रिकर्शन। देन मिक्स्ड, काफी सारी पॉपुलर प्रॉब्लम्स हैं जो अगेन आप जस्ट
You can browse through the Code Studio guided paths of data structures and algorithms, and it has detailed sets of notes for recursion. Tower of Hanoi ki, that is the most basic problem you can start with. And yeah, paths in a maze is again a very important problem. The N Queen's puzzle, and you have subsequences of a string. अगर आप किसी भी फैन कंपनी में ट्राई कर रहे हो, डू प्रैक्टिस subsequences of a string, because फैन कंपनी बहुत ज्यादा emphasize करती हैं आपके strings based questions पे. Okay. And guys, binary strings, binary search, ये सब डिवाइड एंड कॉन्कर से हो जाएगा, आई गेस उसमें कवर होगा. तो या now, where does sorting algorithms comes in play and why do we need to learn them? तो जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, as I was saying, let's consider कि Amazon का कैटलॉग बना रहे हो आप, तो जब हमारे पास इतना वास्ट एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट ऑफ डेटा प्रेजेंट है, इस पे ऑपरेशन करना requires a lot of the data to be ordered, ताकि हम एक पर्टिकुलर मैनर पे फाइनल प्रोडक्ट दे पाए. राइट, जब हम सर्च कर रहे हैं, जब हम एप्पल सर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास एक कैटेगराइज्ड व्यू आ जाता है जहाँ पे हमारे पास साथ में और ब्रांड्स भी लिस्ट होते हैं कि यू कैन ग्रो थ्रू दीज टू. तो आप देख रहे हो कि एक ऑर्डर्ड डेटा आ रहा है हमारे पास, राइट. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, बबल सॉर्ट तो इट्स वेरी इजी, सबको आता है. इट्स जस्ट एक फॉर लूप लगा के यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर द एलिमेंट. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स आपको इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, इनफैक्ट क्विक सॉर्ट भी पता होना चाहिए. क्विक सॉर्ट अगेन uses the divide and conquer technique. तो please go through these at least three sorting techniques. And guys, ये सारा material is available for free on the guided section of Coding Ninjas, and you can just easily ब्रोज थ्रू दोस्त. ठीक है, कि वहां पे डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि सॉर्टिंग क्या होता है, हर टाइप ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक की इंफॉर्मेशन आपके पास, एंड प्रॉब्लम्स भी दे रखी है उन्होंने कि आप कोड भी कर सकते हो जो भी आप सीख रहे हो उससे. यूजुअली हमारे पास 6 टाइप ऑफ sorting techniques होती हैं. Like we have selection sort, we have bubble sort, insertion sort, merge sort, quick sort and counting sort. ठीक है. बेसिक क्लासिफिकेशन हमारा सॉर्टिंग में इन प्लेस सॉर्टिंग एंड आउट प्लेस सॉर्टिंग होता है. देन वी हैव स्टेबल एंड अनस्टेबल सॉर्ट, एंड वी हैव द अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव सॉर्ट. ठीक है. Guys, detailed में again I'm saying, just go through the guided paths in Core Studio. You have everything there. वहां पे जाके कोई भी, you can just click on learn more and learn about any topic you are facing issues with. You have topics from React, you have topics from data structures, aptitude preparation, you have fundamentals of HTML, you have guided paths for a particular company if you're aiming for that, and you have basics of Java, you have basics of C++. So everything is present over there. Detailed definition, detailed uh, path आपको वहां पे ज्यादा better मिल जाएगा. So do go look for those. I'll just paste the link in the chat if someone is facing issues opening it. Okay, so हमने stacks की बात करी थी, हमने data structures की बात करी थी. There is one particular structure that is linked list. Why is linked list so important? And
इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो यूजुअली आती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें हमारे पास रिवर्स द लिंक प्रॉब्लम है। Then we have sorting problems. We have modify a particular linked list in some manner. So practice such kind of questions. Now, linked list होता क्या है if you are a beginner? Linked list is a dynamic linear data structure जहाँ पे if you remember arrays हमारे continuous memory space पे थे, ठीक है। बट लिंक्ड लिस्ट ऐसा नहीं है, लिंक्ड लिस्ट ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी कहीं से भी उठा लेता है। नाउ इफ वो कहीं से भी उठा रहा है, देयर हैज टू बी अ पर्टिकुलर नोड की जो पॉइंट करे, ठीक है। तो यहाँ पे दो फील्ड होती है हमारे पास एक पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में, दो चीजें सेव होती हैं। पहली जो डेटा है, वो फील्ड क्या डेटा कंटेन कर रहा है। दूसरी उसका पॉइंटर। ना पॉइंटर क्या कंटेन करता है, पॉइंटर कंटेन करता है हमारा एड्रेस। तो हमारे पास दो क्या चीजें स्टोर हो रही हैं, एक तो डेटा पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में जो स्टोर हो रहा है, दूसरी चीज एड्रेस जिसको वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मतलब जब हम उस नोड पे आए तो उस नोड को पता हो कि मेरे को इस नोड को स्कैन करने के बाद नेक्स्ट कौन से वेरिएबल पे जाना है या नेक्स्ट कौन से एड्रेस पे जाना है, ठीक है। यूजुअली द फर्स्ट नोड इज नोन एज हेड एंड कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द सेकंड नोड। एंड ये तब तक साइकिल रिपीट करती रहती है जब तक हमारे पास लास्ट नोड नल को ना पॉइंट कर रही हो, ठीक है। Now there are three types of linked list. We have single linked list, we have double linked list, and we have the circular linked list. Each and every linked list is important, and यहाँ पे questions as I said, you have the reverse linked list problem. You have add some data in the linked list. You have modify or edit this particular node. So you have sort the linked list. Again, it's वन ग्रेड अबव देन array, ठीक है। तो अगर आप array से शुरू कर रहे हो, स्ट्रिंग्स पे जा रहे हो, स्ट्रिंग्स के बाद एक ग्रेड अप हो गया लेवल का व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग लिंक लिस्ट। ओके, तो अगला जो हमने डेटा स्ट्रक्चर वहां देखा था, इट वाज स्टैक्स, राइट। स्टैक्स एंड क्यूज। तो स्टैक्स एंड क्यूज क्या होते हैं, एंड अगर हमारे पास लिंक लिस्ट आ गया तो इसकी नीड क्या है। अब हम जब लिंक लिस्ट में सर्च कर रहे थे तो बहुत ही रैंडम ऑर्डर है, राइट। हम हमारी नोट्स कहीं पे भी प्रेजेंट है एंड हम बस लीनियर मैनर में सर्च कर पा रहे हैं, या हम डायनामिकली कुछ क्विक सॉर्ट या हम कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक लगा के बाइनरी सर्च लगा के उसमें सर्च कर सकते हैं। स्टैक्स एंड क्यूज हमें एक और ऑर्गेनाइज्ड डेटा दे रहा है। कैसे दे रहा है? स्टैक्स work on a principle that is last in first out, and queues work on a principle last in last out. Stacks usually क्या होता है, like let's say आपने तीन बुक स्टैक कर रखी है, ठीक है। जब तीन बुक स्टैक कर रखी है तो जो लास्ट बुक आपने पढ़ के ऊपर रखी है, आप उसको ही सबसे पहले बाहर ले सकते हो। जो लास्ट इन था स्टैक में वो फर्स्ट ग्रैब कर सकते हो आप, राइट। क्यू क्या होती है ऑन दी अदर हैंड? क्यू इज लाइक व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन a queue, let's say कोई मूवी लगी है, it's your favorite movie and you're buying ticket, या if you are a sneaker fan, तो कोई नया sneaker रिलीज हुआ है and there is a huge line। तो जब जो फर्स्ट यू नो कस्टमर होगा, he be granted the product first। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू में यूज होता है, एंड स्टैक्स में लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज होता है। I hope examples are making things more clear to you, and अगेन क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यूजुअली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कम क्वेश्चंस आते हैं इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड पे। एप्लीकेशन बेस्ड पे क्वेश्चंस इफ यू आस्क, तो आई लाइक टू हैव टू स्टैक्स, एंड आपके पास टू स्टैक्स हैं तो उनको मर्ज करो टू यूज स्टैक एज अ क्यू, एंड यू हैव द वैलिड पैरेंथेसिस प्रॉब्लम। लीड कोड का बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। and you have simplified the directory। एक आपके पास डिक्शनरी होगी, उसको सिंप्लीफाई करना विद सम वेरिएबल जो गिवन होगा, ठीक है, विद सम कंडीशन दैट इज गिवन। तो
These are a few kind of problems जैसे you can expect in the interviews. Now trees या बाइनरी ट्रीज क्या होते हैं? जब हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कवर कर चुके हैं, अब हम डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर पे जाएंगे. ट्रीज इज कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे आप it, अगर हम बाइनरी ट्री की बात करें तो इट इज अ टाइप ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे इट इज अ मॉडिफाइड ट्री डेटा स्ट्रक्चर. यहाँ पे क्या होगा कि हर नोड के पास एट मोस्ट जस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं. ठीक है, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे. तो ईच नोड कंसिस्ट ऑफ 3 फील्ड्स. व्हाट आर फील्ड्स? हमने लिंक लिस्ट में देखा था सिर्फ 2 फील्ड्स थी, राइट? एक हमारे पास डेटा था, एक हमारे पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस था. बट यहाँ पे अगर हम ट्री स्ट्रक्चर देखें तो हेड नोड होती है, राइट? उसके बाद दो हमारे पास वैल्यूज है, लेट्स से. ठीक है, हम एक सिंपल ट्री डेटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें हमारे पास एक हेड नोड है एंड दो वैल्यूज है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड. तो अब जो हेड नोड है उसके पास 3 वैल्यूज का डेटा होगा. एक अपना डेटा होगा, एक लेफ्ट का एड्रेस होगा और एक राइट का एड्रेस होगा. तो इसलिए जब भी हम एक ट्री की बात करते हैं तो उसमें 3 फील्ड आ जाती हैं: डेटा, लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस एंड राइट चाइल्ड का एड्रेस. And some important topics that you should consider learning about trees is construction of a BST, traversals कैसे होते हैं, modification क्या क्या कर सकते हैं हम, convert कैसे कर सकते हैं हम एक ट्री को किसी भी अदर डेटा स्ट्रक्चर में. And so these are a few type of ट्री traversals is very important guys. And tree traversal पे बहुत सारे question based होते हैं. For example, you have the reverse level order, you have boundary traversal. एंड traversals में से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने ओए में, दैट इज द ऑनलाइन असेसमेंट. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज में तो इट्स लाइक रेयरली कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज आपसे पूछें, बट हाँ व्यूज भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू. एंड अगेन ये आप ट्रावर्सल्स अगर आपको अच्छे से आता है तो यू कैन मेक दैट. स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे LC ऑफ 3 नोड्स. यू हैव हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री और हाइट ऑफ अ ट्री. तो please go through these type of questions when you're understanding the problem. Okay. Again, someone has asked in the chat for the link of the map. The link is given in the description, guys. You it or it is in the pinned comment actually. So the link of this whimsical map is given as a pinned comment on this chat. You can just go through that. Okay, so let's just take a small break and let's see if you have asked any questions. So till now हमने क्या कवर किया है कि if you have to sit for placements, आपको किसी भी फॉर कोडिंग पर्टिकुलरली आपको किसी भी एक लैंग्वेज का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए. उस बेसिक्स में क्या क्या था वो हमने मैप में ऑलरेडी लिख रखा है. You should know the basic syntax, you should know the data types which are available, variables कैसे यूज होते हैं, conditional statement, I'm so sorry for the spelling. So you have conditional statements, you have the iterative statements, and obviously the most important is the oops concept. Okay, do not miss out on the code oops concept, guys. It's very important. So yeah, guys, I'm not explaining the concepts here. Okay, I'm just explaining you what you need to do for, I'm just giving you a path कि आप क्या follow कर सकते हो. For detailed descriptive sessions on recursion or any other topic, you have the YouTube channel of Coding Ninjas. There must be a particular session on recursion of particular coding language you're hoping to find for. If not, guided paths में जाओ, वहाँ पे बहुत detailed notes हैं.
You can easily, when you link paste here chat me, so you can just go and search for those. Okay. So Rishikesh has asked, I'm a beginner level at programming and I'm doing my bachelor's in computer application. Also, I've enrolled for the career campus program. That's great. I hope this session helps you. All the best. Should I continue with Java and place Python for placement? Yes, Abhinav, it's completely fine to continue with Java and Python for placement. And I'm not sure if you are asking of Java or Python, but if you're familiar with both the language, it's completely fine. You can develop projects using both languages. Java may, if you're hoping, Java may you have Spring Boot and Maven technologies through which you can create projects, full stack application projects. And Python may you have Flask and Django dependency. Flask projects are relatively easier than Django, I feel. So it's totally fine. किसी भी language में करो, just make sure you have relevant projects in your resume. Okay. So you have 6 star on HackerRank, but you still don't have confidence. So in this situation, guy, what you can do is you can practice questions on LeetCode or some other coding platform. Uh, Make sure you're not just copying and pasting the solution, and you're doing yourself. This is how you can actually build your confidence. In fact, you can practice Code Studio Pay questions. Everything is available for free, and her company ka tag is there, so you don't have to pay for anything like code. Ki, I can't find this particular question because it's logged or something. So you have everything for free on Code Studio. So just go give try and just problem may you get stuck. What you can do is give that problem 10 to 15 minutes of your time. If you're still not able to solve that, look out for hint videos. Do not just go and search for the answer or solution and just copy and pasting. Do not do that. Understand the question. When you'll be brainstorming for 10 to 15 minutes, you would eventually lead to the solution at the end. If not, yeah, you can obviously go through the hint videos or just look up for the pseudo code and look up for the logic because that is where you're facing the issue and try to code it yourself because when you'll be mapping the codes from pseudocode to your particular language you'd relate key and that would stay in your mind too if that particular question gets asked in the interviews, so you can relate quickly key I tried this question then that and I got stuck here, so it will just directly hit you. So if you completed a DSA from Coding Ninjas, the next step should be to create good projects in the resume and start applying for the companies. I don't think there is anything else you should do for placements. Uh, if you have and practice DSA questions if you haven't already. Uh, it would just be helpful for your profile and yeah. If you're asking for referrals, people do ask how many stars you have, how many questions you've solved, and they do look up on your coding profiles ki what is the current status of how many questions you solved or something. C is not recommended for placements now.
It's obviously a object-oriented language. Do not start or do not hope you would get in a company by just using C. So it's either C++, Java, or Python. Okay, and if you're obviously a stack or if you're a developer, if you're a web developer or Android developer, uh, any language, you can add Java, Kotlin, and you can add JavaScript if you're a web developer. So maybe you can practice the essay questions. It would be great if you can provide links for the problems of the mentioned topic. Okay, what I can do is I'll just take you to the Code Studio website and I'll help you out with the links and all. So I'll just share this link in the chat too, and I'll open this website. Let me just share the screen. I hope the screen is visible, guys. I have shared this link in the chat. So when you just come on this page, you have this data structures tab. All you have to do is you have to just select what kind of data structure you're practicing right now. If you're starting with arrays, just click arrays here. You'll be getting number of problems on arrays too. You can select the company you're aiming for. You can select the difficulty level, and yeah, you can in fact practice even the advanced algorithms. You can search for algorithms you are practicing. You can search for the data structure you are practicing. And as far as I was telling for the guided paths, so just go in the guided path section. You have everything here. Uh, if you're practicing data structures and algorithms, just go here. You have arrays, you have strings and everything. So this is something that is free. You can just start practicing. I hope this helps. And yeah, let's get back to the session now. So no, SQL is not enough for placement because you cannot solve DSA questions using SQL. If you're a backend developer, you would still be asked some kind of DSA questions. So it is always better to have a programming language. SQL is just DBMS based language that would help you if you are planning to sit as a DBMS engineer or data engineer or something. But again, DSA is must. Uh, it would always like matter in your interviews. You want to join Coding Ninja's course in Python if it's available? Yes, Krishna, it's available online. You can just search and you will just get it on the website itself. I hope I answered your question. Okay, how to build confidence while learning? As I said, practice enough kind of questions, enough amount of questions कि you have confidence in yourself कि अगर कोई भी question आ गया मैं solve कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. It would matter कि हाँ जब नहीं करे होंगे questions तभी low confidence होगा जब questions कर रखे हैं जब आपने सब कुछ cover कर रखा है जब basics आता है question कर रखे हैं
data structure के बारे में you know everything, you know about the time complexity of the algorithm you're using, तो why would your confidence be low, right? Just अगर low है तो just uh, give yourself a break, uh, and again, stop everything, stop doing everything, open up a question जहाँ पे you're stuck, start practicing that. अगर फिर भी you are कि नहीं होगा मेरे से इंटरव्यूअर के सामने, तो just treat interviewer as a teacher, like you give viva in your college, right? So viva maybe you have an oral discussion about what the topic he or she, your instructor, have asked you. So just treat the interview as a viva जहाँ पे they are asking questions coding related. That's all. Don't be scared of the interviewer. They would not eat you. They really want to help you out, and वो आपको small hints देते रहेंगे पूरे interview में कि if there is something you are missing out on, or if the logic is not right, they would help you get to the logic. Again, I'm talking about the FANG companies. I am not sure if the same culture is being followed in other companies too. Uh, no, Amazon do not ask aptitude related questions for placements. Uh, so I hope I answered your question, Ayush. DSA guided path is enough, but it would only help if you are practicing questions side by side. It is enough. Again, हाँ इसके अलावा this is just coding related. आपके पास OS, DBMS and networking की भी enough amount of knowledge होनी चाहिए when you are sitting for interviews, because core related subjects हैं ये, and interviews always ask questions on these topics. मोस्टली हमारे जो फाइनल राउंड्स होते हैं इंटरव्यूज के, वो हमारे कोर टॉपिक पे ही अवेलेबल है. सो या SQL is not something that is very difficult. If you are aiming for a data engineer role or समथिंग लाइक दैट, तभी आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे एसक्यूएल में. नहीं तो एसक्यूएल इज नॉट यूजुअली आस्क्ड इन इंटरव्यूज. दे यूजुअली आस्क एसक्यूएल रिलेटेड टॉपिक इन जस्ट ऑनलाइन असेसमेंट्स जो वो कोडिंग टेस्ट देते हैं. तो उस कोडिंग टेस्ट में दे ट्राई टू रैप अप एवरीथिंग. तो एसक्यूएल सिर्फ तभी पूछा जाता है. नहीं तो एसक्यूएल की क्वेरीज वो आपसे तो ज्यादा से ज्यादा जॉइंस के बारे में पूछ सकते हैं, टेबल रिलेटेड, स्ट्रक्चर्ड रिलेटेड कंटेंट से पूछ सकते हैं. दैट इज इट. मतलब एसक्यूएल से जॉइंस के अलावा तो देयर इज नथिंग दैट वुड बी आस्क्ड. तो जॉइंस के लिए ही ज्यादा टाइम लगेगा आपको, बिकॉज अगेन काफी सारे टाइप्स ऑफ जॉइंस हैं, एंड बस वही ट्रिकी पार्ट है एसक्यूएल का. बस अगर आपने एसक्यूएल में जॉइन सीख लिया तो देयर इज नथिंग लेफ्ट इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. इट्स वेरी इजी. Yes, it's completely okay to prepare by yourself. You don't have to depend on any other. Uh, if you're okay, if you have a structured path for yourself, how you want to do, so there is no need to depend on any other source. If you have doubts, you can ask any educator. So they would help you out. I am not the best person to answer questions on machine learning because I do not have any experience in that. So, yeah. If only 1 month is left for placement, I can only tell the strategy. If I know कि you're good to go with the basics, you're good to go with the uh, algorithmic part. Because अगर एक ही महीना रह गया है तो practice enough amount of questions, Shubhangi. That's the only thing you can do right now. जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, मेक श्योर कि आप अपने प्रोजेक्ट को रिवाइज कर रहे हो जो भी आपने रिज्यूमे में ऐड कर रखा है.
because at times interviewers ask about the concept or you have used in the project. So yeah, let's start with the last topic that is left. तो जब आपने algorithms clear कर लिए, now this is something that is the advanced type of algorithms, greedy approach, dynamic programming. अगर DSA सब हो गया है and you're completely familiar with it, so what you can do is you can practice competitive programming and okay, so online YouTube sessions, I guess YouTube Live happens almost daily. You can join in every day at 7 p.m. Yeah, yeah, the topics are different. Every educator is different every day. So you can join and you can learn about things. Usually these lives are about placement strategies, some kind of questions you can practice. So yeah, you can join. Now, dynamic programming क्या होता है? It's as I said, it's an advanced and it's an optimized technique that is using recursion and यहाँ पे we divide a complex problem into smaller sub problems and it has many applications in computers and breaking and partition based problems DP के हैं. You have DP with arrays, you have DP with strings, you have DP with uh, trees, and you have counting based problems too. So do practice such kind of questions. Something that I've missed in this map is hash maps. So do practice questions on hash maps too. It's the very important topic. And you have string algorithms like Z algorithm and you have D queues, you have circular queues, so you can try, you have bit manipulation. Again, that's an important topic. तो ये सारे topics को wrap up करो. Uh, as soon as you've wrapped up with DSA, you have practiced questions. Questions के साथ साथ you can start with development. Development क्या होता है? Now development में आप कोई भी path use कर सकते हो. You can either go with Android, you can go with iOS, you can go with this is mobile development I'm talking about. You can start with machine learning development. You can start with as I said, machine learning में automation based आ जाएंगे. You can start with data science based project. You can start with web development. So any path that you are interested in, उस path पे जाओ. You don't have to go कि web development ही ज़्यादा demand में है. That isn't something that you're looking on for. अगर आपको interesting नहीं लग रहा है, so do not go for that path. जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, to go into that path and उस path में you can basic चीजें आपको क्या आनी चाहिए. uh, हर path का अलग है. Now I've given this for Android and web. Now in this Android and web में आपको you should be familiarized with at least the skeleton part front end, how you can connect a skeleton based application to the backend, and you can you know how to use the get and post APIs. You are familiar with the concept of how the data is being stored into the database. So यहाँ पे you get to use SQL. You can use any relational database that is SQL, or you can use any non-relational database that is like MongoDB or something. So
this is something how you can map your uh, development path to. Where development path can, mobile devs and web devs can relate, but for machine learning or something, you can find some paths online. You can just go and search, what is the guided mind map or guided paths to become a machine learning developer or an automation developer, automation script writer. बहुत सारी technologies है which you can cover in the development part, which you can add these, um, into your resume. So, guys, I'll come to the chat section in just 10 minutes. I'll just quickly wrap up the uh, things I have and we can chat that time. And then I'll reply to your questions. So I think for most of the things I've covered, you have free resources of Code Studio. You can practice ample amount of questions. Uh, you have the YouTube channel. If you get stuck, you can come here and learn. We have DSC Java and DSC C++ at our YouTube too. So you can find those videos. You can go through those videos. You can ask your doubts in the comment section and I hope that helps you out. We are working on the DSA Python series too, so it will be live soon. And yeah, so if you have any doubts, you please feel free to ask in the comment section. You can contact either of the educators on their LinkedIn and you can ask questions there too. So yeah. And for the development process, please make sure you are familiarized with the frameworks or libraries you're using because uh, that is really some that is important and it builds a good foundation as a developer. So yeah, this is just coding based. I have not covered the core development or core subjects part that consists of databases, operating system, networking, so on. So you know, as for networking, you should know a few kinds of concepts. You should know what kind of we have some kinds of commands we used for, like, let's say ipconfig, we have nslookup, and so this kind of concepts you should be familiarized with. Now, Linux में कौन सी commands use होती हैं if you are a Linux user, because OS में usually they focus on Linux or they focus on they don't usually ask about Windows terminal question. तो Linux पे ही you have questions, तो at least आपको uh, जो basic terminal commands हैं Linux की वो पता होनी चाहिए. Like uh, you have cd, ls, mkdir, ये तो हम regularly use करते हैं command. So you have pwd command की जो आपको path कौन सा है, आपके cursor कहाँ पे है, that tells it. And this is something you can use your telnet command. So yeah, make sure you are familiarized with these topics too before going into your interviews. Okay. Yes, Gaurav, please start the essay. It's the best time. Please don't uh, wait for anything now because it is something that is very important and आपको time लगेगा DSA करने में. So please do start DSA now. If you are from non-tech background, you can start with Python. Python is something that is relatively easier than other programming languages and it has vast scope too. So yeah, we can start with Python and can straightly target FANG guys. CP or web dev are completely two different things. CP is comparative programming, though it is not part of development. Comparative programming के अलावा भी you need projects. तो अगर आप development में जा रहे हो
तो डेवलपमेंट के लिए आपको मोबाइल डेव या वेब डेव कुछ ना कुछ आना चाहिए, बिकॉज यू कैंट शो सीपी बेस्ड प्रोजेक्ट्स, राइट? तो प्रोजेक्ट्स तो आपको दिखाने हैं। वही सीपी समथिंग यू डू आफ्टर लर्निंग डीएसए, ठीक है? डीएसए में अगर आपने इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया एंड यू आर इंटरेस्टेड इन कोडिंग, तो आप कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हो। व्हाट इज कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग? आप सेम सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस होंगे at much higher level than what you practice at DSA based questions. आप उनको क्रैक करोगे by using your logics and what you have learned in such a manner कि वो time efficient भी हो, वो space efficient भी हो, and वो fastest program हो, fastest algorithm हो. So CP something like that. And development, again, as I said, you need development to show good amount of projects on your resume. You don't need development for uh, पर्सनल, वो मतलब अगर आप पर्सनल इंटरेस्टेड हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट आपको प्रोजेक्ट्स तब भी शो करने ही है अपने रिज्यूमे में, राइट? बिना प्रोजेक्ट्स के नो कंपनी वुड टेक यू। तो प्लीज वर्क ऑन एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट्स इन योर रिज्यूमे, 2 मीडियम लेवल के, एंड अगर एक बिगिनर लेवल का भी होगा तो भी चलेगा, बट मेक श्योर यू हैव एटलीस्ट 2 to 3 प्रोजेक्ट्स। नो, नो वी कैन नॉट। एंड यूजुअली वो आपसे पूरा इम्पोर्ट वगैरह नहीं लिखवाते हैं इंटरव्यूज में। हाँ, अगर ओए की बात करो तो स्ट्रक्चर्ड ऑलरेडी आपके पास होगा लिंक लिस्ट का गिवन। यू जस्ट हैव टू यूज द लॉजिक, ठीक है? तो या, when to know if you're ready for FANG interviews after learning DSA? So first of all, it's no way that you would know you're ready before sitting in the interview. But make sure you have practiced at least medium and hard level questions. Easy तो you are familiar with. तो जब आप इतना लेवल हो जाएगा, जब आपने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, एंड इस क्वेश्चन का नंबर कितना है दैट डज नॉट मैटर्स, बट हाँ, क्वेश्चन का लेवल कितना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, दैट इज व्हाट मैटर्स। ठीक है? कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, दैट इज नॉट समथिंग यू शुड बी that you should be rated as a programmer, because programmer के पास अगर skills अच्छे हैं तो no number can define what kind of skills you have, right? So please do not go solving thousands of questions on lead code. I solved 600 questions, I solved 300 questions, but make sure कि आपको उनका लॉजिक पता है। अगर आपने बाइनरी सर्च के 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो यू ऑलरेडी नो कि व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आई कैन मैक्सिमम गेट इन माय इंटरव्यू, राइट? तो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करने के अलावा व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रैक्टिस डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन। दैट इज समथिंग आई वांट टू टेल, एंड I am not sure about this. I haven't filled up for Uber ever. So I don't think. I think I did filled up long way back in my third year actually for an internship or something. But I don't think they used to ask at that point. I'm not sure if they're asking now. So yeah. Usually competitive programming is asked in companies nowadays, but I'm not sure about Uber too. Then to do DSAQ after getting each concept like linked list, or to study whole DSA and then to do Q. DSA questions you're asking, okay. DSA questions you can start relatively side by side when you're learning
a concept. So because that would be actually helping you out. आपको दोबारा पूरा DSC stack करके if you have missed out on something उस पे वापस नहीं आना पड़ेगा. And you can, if you've started arrays, start practicing questions from arrays. Finish arrays and maybe then you can start because that would be better. DSA is required for an internship if you are aiming for a good company. In fact, for any company, DSA is required. They would question you when they're interviewing about DSA skills. Okay, guys, so that is it from my end for the day. If you have any doubts, feel free to ask on the YouTube comment section or you can ping over LinkedIn too. So, thank you so much for joining in. I hope the session helped you out and all the best for your placement series. Uh, bye bye. Have a great day. Enjoy the weekend.